This is completely boards type question. ठीक है ना? Here you have to choose an option in for which you have to start doing the VBT thing. Otherwise, it's perfectly board type question. Okay, yeah, has given an answer. So I'll give you guys 2 more minutes. Okay, Yad has answered. Okay, that's a Shahid has answered. What about others? Matiha. ये तो कर सकते हैं आप लोग. I mean, with elimination method also you can do this. ठीक है? ठीक है, वेरी गुड. सी एलिमिनेट कीजिए ना यहाँ से. सबसे पहली बात तो देखिए, when you are having D2sp3, it is only possible for what? The coordination compounds, right? D2sp3 will not be possible if you have simple non-metals. Non-metal case we will only have sp3. In that case, I can ignore this one. Is what? sp3d2. And similarly, BRF5 is also sp3d2. So both of these you can cancel because these are sp3d2. Now, when you look at the C option is what? It is PtCl4. Here the coordination number, it is equal to how much? It is equal to 4. That means it either be sp3 or dsp2 for the square planar complex. So this is also a not possible answer. The only answer that we are left with is CONS3 whole 6. Okay. Now you can calculate. I mean, you can do this whole thing now. You have CO that is 3 positive. So Sakti Vikraman Feko me. Feko 27. 27 is for cobalt. Huh? So it will be S2 B7. Okay. Now it is cobalt S and D निकल जाएगा 6. ठीक है, S0 D6. Now, if you look at NH3 and CO3 positive, that means we now have to go back to the spectrochemical series for ML6. ठीक है, यहाँ पे देखिए. So in the case of CO3 positive, oxygen donor, nitrogen donor, carbon donor, all are what? Strong field ligand. Now, once you have got the strong field ligand, what we will do? You'll see that, okay, NH3 is a strong field ligand. Strong field ligand, that means pairing will take place. Now, if pairing is going to take place, then you have these two levels. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So our d orbital will look something like this: 1, 2, 3,
4, 5. So these are pair, these are vacant. Now the coordination number is how much? It is 6. So we need 6 vacant orbitals for the hybridization. So we have got the 2 from D, D2, then 1 from S, and then I will require the next. So D2 S3 will be the hybridization. Even with the elimination method, you can confirmly, I mean, you can confidently say that these three options are not right because SP2, SP2, this coordination number is 4, SP3, SP2 will be only the options. Okay. Please copy this down. By the way, am I audible clearly? Is my screen? Yes, no, guys, anything? Yes, okay. Okay, I hope you have done writing. Try this. The complex with highest number of field splitting energy. ठीक है? In this case, you have to इसमें तो आपको T2G G करना पड़ेगा. 6. By the way, you don't even have to do that. You don't even have to do that. आप देख लीजिए यहाँ पे ligand क्या है? Same है. Then, I mean, the ligand is all same. Then you will look at the oxidation state. Oxidation state is also same. तो आपको सीधा मिल जाएगा number of क्या बोलते हैं number of electrons. ठीक है? To try this, by the way. अब सबसे पहले देखिए water is going to be a strong field ligand or a weak field ligand in this case. Now if it is weak field ligand, then what will happen? Pairing will not take place. ठीक है, तो आपको बस देखना है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और EG में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. चलिए, let us give you one more minute, I think.
ओके मारिया, ओके time is over, है ना? Okay. By the way, all of you can see that water is going to be a strong field ligand because all of these metals are in the 3D series, and in 3D series, all of them are having what 3 plus oxidation state. And if you look at your notes, metal in 3 plus only carbon and nitrogen donors are strong field. So oxygen donor, that is water, it is going to be a weak field ligand. Okay. Now, when you are having a weak field ligand, that means you will be placing first of all the electrons in the T2G level, and then you are going to fill it in the EG level. So we have to see the number of electrons that is present in Fe3 plus. Fe3 plus will be, see, Fe is 4s S2 D6. So Fe3 plus will be S0 S0 and D5. ठीक है? D5 will be 1, 2, 3, 4, 5. So you have the more number of electrons you have in T2G, na, that will be more stable. If you have more electrons in EG, that but unstable because that is higher in energy. Mn के लिए देख लेते हैं तो Mn is what? It is S2. Mn is S2D5 and Mn3 positive will be S0 D4. ठीक है? So the configuration here will be T2G3 EG3. Here the configuration is T2G3 EG2. If you look at chromium, SUC PV SUC PV 24. So this is S2D4. So it will be Cr3 positive. It is going to be S0D3. So it will be T2G3. So this is probably the most stable because इससे ज़्यादा stability आ ही नहीं सकती है in the weak field ligand case, because here we are having electron only in the stable, that means lower energy, है ना? Maybe यही होगा आंसर. Ti का देखें शक्ति, Ti is 22, so it will be 22 तो S2D2. So Ti 3 positive, it will be S0 D1. It will be T2G1. So the del O, it is directly proportional to the number of electron in T2G and inversely proportional to the number of electrons in EG. ठीक है? Because T2G is what? T2G आपका क्या है? हाँ, T2G is the stability factor, है ना, जहां पे आपके पास it is lower energy. That is why the maximum highest magnitude of crystal field splitting energy will be in CrOH whole-wise. That is CrH2O whole 6, 3 positive. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. सर ठीक है. वापस जाओ. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा. जो जैसे सक ती वी क्र मन पे को को Z. So if you remember the atomic number, then it's very good, very nice. ठीक है? But if you don't, then please remember that it is starting from 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. So apart from chromium and copper, that you should know the electronic configuration because it is exception. Class 11 से पढ़ते आ रहे हैं. But in general, you can write electronic configuration. जो ये 2 है ना, this will be the S2 and D1. This will be S2 D2, S2 D3, है ना, इस तरह से रहता है. So from the atomic number itself, you can, it is directly related to the electronic configuration. By the way, it is coincidence, ऐसा नहीं है कि मतलब उसका एटॉमिक नंबर 21 है तो ही S2D1 हो रहा है, वैसा नहीं है. अब जैसे Zn के केस में 30 है तो ऑब्वियसली 30 में S3 हो ही नहीं सकता बिकॉज एस कैन नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स. दिस काइंड ऑफ ट्रिक काइंड ऑफ थिंग आप कर सकते हैं. मूविंग, ट्राई दिस. बाय द वे, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जहां पे पेयरिंग हो जाएगी और यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी. ठीक है? Spin paired and spin free complexes are terminology that are given in NCERT also. जो लोग 12th क्लास में से पढ़े वहां पे भी हमने बताया था कि when you have spin, जो हम लोग कहते हैं ना कि it is going to be an inner orbital complex, तो उसकी को हम लोग बोलते हैं spin paired complex. यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती. स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन वीक फील्ड लेकिन सही आपको आंसर आ जाएगा.
चलिए, आई एम गिविंग यू गाइस लाइक 1 मिनट, ठीक है ना, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेट करने का कुछ नहीं है इसमें। ओके मारिया, वेरी गुड। Okay, time is over. See here, guys. Let's see the oxidation state. In this case, cobalt is going to be, so it will be CO3 positive. Similarly, COF639 will also be CO3 positive. Cobalt will X plus minus 6 for 6 will be equal to minus 3. 6 will go that side, it will become 3 only. ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 positive होगा. Now, in cobalt 3 positive, what are the strong field ligand are carbon donor and the nitrogen donor as well. And oxygen donor, oxygen भी होता है. These are the three. So obviously nitrogen is going to be strong field ligand. Fluorine is going to be weak field ligand. Strong field ligand में क्या होगा? Pairing होगी. Weak field ligand में pairing होगी. So inner orbital spin paired. Paired तो होगा नहीं. Spin and spin complex. COS3 whole 6 will be spin paired and COF6 is going to be spin free. ठीक है? आसान सा सवाल तो नहीं करना था इसमें. Identify the ligand, strong field ligand or weak field ligand. चलिए, moving on. Try this. ये कीजिए, इसमें आपको आराम से giving you guys 3 minutes आंसर आना चाहिए. You have your notebook, it is a notebook, ठीक है, कल जो हम लोगों ने नोट्स लिखा था ना, उसी से सारा हो जाएगा. Okay, I've got two answers. Shahid and Tarif has given the answers. Okay, Mari also gave the answer. सिर्फ आपको दो कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना है, NiCO4 और NiCl, ठीक है. बिल्कुल बोर्ड्स लेवल का सवाल है ना, बोर्ड्स में भी इस तरह के सवाल रहते हैं.
यहाँ एक बार चेक कीजिएगा आंसर फिर से। Well, it is almost is going to be over. चलिए ठीक है, इसी। So let us first of all look at NiCO4. ठीक है, we have to only look at the number of electrons in nickel because CO is a strong field ligand, so it is obviously going to what? Obviously going to pair everything. Now, the only problem will be if your nickel is having a D7 or D9 type of configuration, then it will be a problem because then it cannot pair that one electron. ठीक है, so it will be paramagnetic in that case, even if it is not a strong field ligand. ठीक है, तो पहले इसको देख लीजिए, निकल शक्ति विक्रमण पे ओ नी, that is 28. 28 that means, sorry, 28 means S2D8. It will be not completely paired. So it is what? It is going to be diamagnetic. Now the options that are can be correct is option number B or option number D. Option number C तो होगा ही नहीं because NiCl4 यहाँ लिखा है। ठीक है, let us see now. NiCO4 is तो diamagnetic. NiCl4 के लिए देखते हैं, NiCl4 2 negative. Now the oxidation number will be X minus 4 is equal to minus 2. X will be equal to 4 minus 2. It will be equal to plus 2. So here we are having nickel, that is D8, and because the two electrons from the s orbital will be removed. Now D8 configuration and Cl is going to be what? It is going to be a weak field ligand. If it is a weak field ligand, then the pairing will not take place. When pairing will not take place, that means there will be unpaired electrons. It will be paramagnetic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are two unpaired electrons. So option number D is the correct option. ठीक है, NiCl4 is diamagnetic and NiCl4 is paramagnetic. Does this make sense? याद आपको समझ में आया? ठीक है, मदीहा, कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? यस मदीहा, कहाँ दिक्कत हुई है आपको? आपका आंसर क्यों नहीं आया? सर मुझे अब आ गया, मुझे मतलब बीच में कहीं मिस्टेक हो गई नहीं थी। नहीं 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 नहीं। ठीक है, कहाँ तक हुआ था आपका? निकल का एटॉमिक नंबर बता था? यस सर। डिड यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल? यस सर। हाँ पता 28। था, ठीक है, फाइन। यू एबल टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ 28। अच्छा ठीक है, व्हाट अबाउट यू फादर? गाइस यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि आप मतलब कहाँ पे आपका अटक रहे हैं आप। देखिए, देयर आर थ्री थिंग्स ना दैट यू हैव टू नो हियर। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल। Once you know the atomic number, you should be able to find the oxidation state. Once you find the oxidation state, you should be able to write the electronic configuration. Once you write the electronic configuration, then you will have to identify whether it is a strong field ligand or a weak field ligand. Once you have identified strong field and weak field ligand, then you will have to plug the electrons. You have to plug electrons in the E2G and EG. ठीक है? Now, if you have to see that where you are getting stuck. Are you getting stuck in writing the electronic यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है आपका? तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे ना, आपको यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिक्कत नहीं है। आप अगर देखें, द फर्स्ट थ्री स्टेप आर नॉट रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एट ऑल। ओके, so if you are getting stuck in any one of them, then you will have to focus on that problem. The strong field ligand, weak field ligand बाद में आएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं बाद में आएगा। ठीक है, if you are getting last two steps, then it is going to be a what? Then it is going to be the problem in coordination compound. If you don't know what is diamagnetic and paramagnetic, तो वो definition का problem, वो coordination का problem है। Diamagnetic is when you have everything paired. Paramagnetic is when you have unpaired electron. There is at least one unpaired electron in paramagnetic. ठीक है, डाई का मतलब ये था ना, दो पेयर, आप इसी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, फादल बताइए तो कहाँ पे आप मतलब लाइक कहाँ अटके थे आप? फादल टेल मी, कहाँ मिस्टेक हो रही है? यस, फादल माइक ऑन करके बताएंगे प्लीज। थोड़ा जल्दी होगा ना, टाइप करने में बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग व्हाट्स मतलब यही कर लेते हैं, इसमें जूम रखा है फिर हम लोगों ने। यस फादिल, चैट बंद कर देते हैं हम। आप लोग चैट ना नहीं कर सकते। चैट नहीं करिएगा तो फिर हमको आप मैसेज कैसे कीजिएगा? ऑप्शंस, माइक इज नॉट वर्किंग। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, चलिए मान लिया आपकी बात। शाहिद आप बताएं? ठीक है, तब आप लिखते रहिए, जब तक हम बाकी लोग से पूछते हैं। शाहिद,
शाहिद, टेल मी अगेन, शाहिद प्लीज टर्न योर माइक ऑन। जी, कहाँ, लाइक ऑन विच स्टेप आर यू गेटिंग स्टक? क्योंकि शायद आपने आंसर दिया था क्या? नहीं, आपने आंसर नहीं दिया था। यस, शाहिद। अरे यार, माइक ठीक है ना फाजिल, नेक्स्ट टाइम माइक ठीक रहना चाहिए आपका, ठीक है? आप लोग सभी का माइक ठीक रहना चाहिए। चलिए, ट्राई दिस वन। हम भी माइक ठीक करके आ जाएंगे किसी दिन, पढ़ते रहिएगा आप फिर हमसे। यू गेव द आंसर शाहिद। इसका नहीं दिया था ना आपने, इससे पहले वाले का दिया था, राइट? ओ नहीं नहीं नहीं, इसका दिया था, ठीक ठीक, माय बैड शाहिद। सही आंसर था आपका। चलिए, ट्राई दिस वन गाइस। गॉट वन आंसर। ओके मारिया। आपने डायरेक्टली दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ना, लाइक यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग, आप नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, आप फिर उससे टैली कर सकते हैं आप आसानी से। डोंट हैव टू डू मच इन दिस क्वेश्चन बिकॉज ये सेम, द लिगेंड इज सेम। ओके शाहिद। ओके याद, वेरी गुड। चलिए, वन मोर मिनट गाइस। ओके फादल, वेरी गुड। मदिया का आंसर नहीं आया है। चलिए देखिए आप, CrH2O3 पॉजिटिव, CrS24 ना, तो S2D4 से आप तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, इट विल बी S0D3। ठीक है? D3 वाला, T2G3 वाला केस कौन कौन सा है बताइए यहाँ पे? क्रोमियम है ना? बताइए। D3 मतलब क्या होगा? T2G3, राइट? बिकॉज पहले तो इलेक्ट्रॉन T2G3 में जाएंगे ना, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ए का 2, बस आ गया सी ऑप्शन। कुछ करना ही नहीं था इसमें। भले ही चार दिए मैं यहाँ पे, लेकिन एक में ही आंसर आ गया। इट विल बी अ वेरी रेयर केस जहां पे आपको ना सारा का सारा निकालना पड़े। ठीक है? चलिए, मूविंग ऑन।
अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना हम छोड़ देते हैं, कभी और टाइम मिला तो इन सवालों को हम देख लेंगे, ठीक है। एंड बाय द वे, दीज टू क्वेश्चंस आर जनरली दिस विल बी फ्रॉम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चंस है। सॉल्यूशन ऑफ NiH2 होल 6 इज ग्रीन कलर, दिस इज कलरलेस। कलरलेस तो आप बता सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो से समथिंग इज कलर्ड, बट ग्रीन कलर एग्जैक्टली बताना, इट इज कंप्लीटली फैक्चुअल। आपको अगर सवाल पे हम बहुत फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज अभी ग्रीन कलर आ रहा है, ग्रीन कलर याद नहीं ये है ना, there's a table in NCERT where they have given the colors for different either you, I mean, there is not even, I mean, वो चांस भी नहीं रहता कि वो सवाल वहां से आएगा ही आएगा। सो आई फोकस मोर ऑन लॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चंस में क्या फायदा होता है ना, आपको एक लॉजिक पढ़ा दिया, जैसे कि CFT पढ़ा दिया आपको हमने, CFT के बाद बहुत सारे आपके पास एटलीस्ट देयर फ्रॉम द PYQs इफ यू सी देयर विल बी मेनी क्वेश्चन, एटलीस्ट आपको हर पेपर में एक सवाल में उससे मिल जाएगा CFT से, ठीक है। तो एक सवाल दो सवाल इस तरह के क्वेश्चन आपको CFT से मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन जो होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अब फैक्ट तो आपको पढ़ते रहना पड़ जाएगा, अब ये तो कभी आएगा नहीं ग्रीन कलर सेम चीज, ठीक है, तो आपको दूसरी चीज पढ़ते रहनी पड़ेगी। उसमें ये है कि आप पढ़ेंगे 10 चीज, उसमें से आएगा एक चीज। लॉजिक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है एक चीज, आएगा 10 चीज, ठीक है। चलिए, सो आई विल नाउ मूव ऑन टू GOC। और GOC में वैसे सब अभी तक, ठीक है। दिस इज वर्किंग फॉर यू गाइस, दिस वन प्लीज टेल मी, लाइक आप लोग को, एंड टीचिंग थ्योरी ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, इज दिस वर्किंग फॉर यू गाइस? मारिया बताएं। Yes, sir. This format is working for you, na? That I'm not taking theory. I mean, बहुत ज़्यादा हम theory नहीं पढ़ाते। I'm teaching theory only when it is required. I'm coming up with only questions generally, and as required, I'm teaching you the theory. This works for you, right, Maria? Yes, sir. फातिल, what about others? Madiha, Taif, Shahid, and Iyad. Yes, sir. It's working. ठीक है। Because अभी ना टाइम भी बहुत ज़्यादा थ्योरी का नहीं है। आई होप बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही हो रहा है ना मारिया, लाइक देयर आर मोर क्वेश्चंस, राइट? Yes, sir. तो वही ज्यादा, अभी वही सही रहता है कि आप सवाल ज्यादा से ज्यादा देखिए, तो आपको कम से कम ना वो डर खत्म हो कि मेंस के सवाल है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल मेंस में आया हुआ था, इसी साल का है। राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर HOCHCN2, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या ही थ्योरी आ रही है, कीजिए जरा। यू सी दैट इट इज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। Yes, Maria, correct. I'm giving you guys 1 minute for this. बॉन्ड लाइन में कार्बन इज नॉट शोन, है ना, कार्बन इज नॉट शोन, एंड द हाइड्रोजन्स which are attached on carbon, that is not shown. Everything else is shown. What is not shown? Carbon and its hydrogens are not shown. No, no, यार, अभी हमने डेफिनेशन बता दिया बॉन्ड लाइन का, है ना। What is the definition? The carbon and its hydrogen is not shown. Carbon and its hydrogen is not shown, ठीक है। कार्बन और कार्बन का हाइड्रोजन नहीं शो किया जाता, बाकी सब कुछ शो किया जाता है वहां पे। जिस तारीफ नो शाहिद। ऑप्शन 4 होगा ना, ऑप्शन 4, बिकॉज कार्बन है यहाँ पे, इट इज नॉट शोन, इट्स हाइड्रोजन इज आल्सो नॉट शोन। अरे यार, कार्बन एंड इट्स हाइड्रोजन आर नॉट शोन, नॉट नॉट बोल रहे हैं। यू गॉट इट नाउ यार, टेल मी। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर, कार्बन एंड इट्स हाइड्रोजन इज नॉट शोन। यस यार, यू गॉट मी। ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसका दिस इज व्हाट कार्बन एंड इट इज नॉट शोन। मेक सेंस यार? यस, ओके, फाइन। चलिए ट्राई दिस। नॉमेनक्लेचर है बेसिक।
can put one answer. No, that answer is deleted. मतलब आसान है, काफी आसान है। और चल ठीक है, आपको मतलब ऑप्शंस देख के होगा। नहीं, तारीख फिर से एक बार देखिए जरा। यस, मारिया करेक्ट। यस, तारीख नॉट इज करेक्ट। यस, मती, हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। बहुत सही। चलिए, गिविंग यू गाइस वन मोर मिनट। यस, या, वेरी गुड, करेक्ट। और इज इट करेक्ट? आई डोंट नो। आंसर नहीं, नो, दैट्स नॉट, मे बी दैट्स नॉट करेक्ट। मे बी योर आंसर्स आर नॉट करेक्ट, ऑल ऑफ। चलिए ठीक है, देखते हैं, एक बार देखते हैं। वो तो मिस्टेक हो गया। See here, guys, the cyclohexane part is common for all of them. So I don't have to worry about the cyclohexane part. I just need to worry that how the numbering will be. You know? So the numbering, we have what are the substituent we are having? This is methyl and methyl. We are having dimethyl. The substituent is methyl that is starting with M, and here we have substituent which is ethyl that is starting with E. Now, when I will number it, it will be numbered something like this: 1, 2, 3. So it will be 1 ethyl, 3, 3 dimethyl, cyclohexane. ठीक है? So while numbering, the priority will be, एक सेकेंड, वेट, नहीं, सॉरी, आप तो सही थे, माय बैड। बिकॉज वी आर हैविंग टू सब्स्टिट्यूएंट, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो बाद में आएगा। सॉरी गाइस, सिंस वी आर हैविंग टू सब्स्टिट्यूएंट्स, दिस मिथाइल विल बी द फर्स्ट वन। ठीक है, माय बैड। 1, 2, 3, and this ethyl will be the third one because we are having two substituents, lowest low can probably यहाँ पे होगा। If it was one ना, चल ठीक है, यहाँ से एक और चीज हम लोग भी देख सकते हैं। This will be 1, 3 ethyl. We are writing 3 ethyl first because it starts with E, and 1, 1 dimethyl is option number B। ठीक है, बट अगर यही सेम चीज कुछ इस तरह से होता ना, you had only one CST and here we had ethyl, then the numbering would have changed and ethyl will be numbered 1 and then methyl, because now here third position also has one substituent and this position is also having one substituent. Now, when you have only one substituent, at that case, we will have to see the alphabetical order. So it is ethyl and this is methyl starting with M. Okay, so that is why. Okay, one thing that I will add here is this D is not taken into consideration while you are writing in alphabetical order. The substituent here we are having, it is methyl. So the substituent are arranged in their alphabetical order. Okay. So D is, we are not writing dimethyl first. Why? Because it is methyl. So di is just a number that shows that there are two methyls. Okay. चलिए, तो B आंसर इसका है। मैं थोड़ा सा लगा था, ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मूविंग ऑन, ट्राई दिस वन। Identify the structure of 2,3 dibromo 1 phenyl pen. By the way, this is also this year's question. ठीक है, इसमें ऐसे टैग ही लगा हुआ है। The reason is that जहां सवाल उठाते हैं ना, there were 2 years।
We have got a few answers. Tarif and Fadil and then Iyad. Okay. We've got different answers. 1, 2, 3. Mm-hmm. Okay, Fadil. Okay, Madiha. Iyad. नो, एक बार फिर से आपको ट्राई करना पड़ेगा। याद वंस अगेन। फिर से देखिए थोड़ा सा। चलिए लेट सी है ना। स्टार्ट करते देखिए। दीज आर द 4 कार्बन एटम्स। अच्छा भाई तेरे हम इसको ना बना ही देते हैं। बनाना है अगर आपको बनाना है ना, लाइक हाउ विल यू मेक इट? डोंट चूज फ्रॉम हियर। इफ आई वांट टू मेक इट पेन, सो विल हैव 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। देन इट इज सेइंग 1 फिनाइल, इन द फर्स्ट कार्बन एटम देयर इज फिनाइल। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन एटम में हमने क्या डाल दिया? फिनाइल डाल दिया। ठीक है, द फर्स्ट कार्बन एटम इज हैविंग नाउ फिनाइल। देन लेट मी इसको चेंज कर देता है। ठीक है, then we are having in the second and third carbon, here will be bromine and the third carbon will also be bromine. इस तरह का कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? एक कार्बन में देखिए, इन दिस कार्बन यू हैव फिनाइल एज वेल एज ब्रोमीन, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक, इसमें ये भी नहीं है। फिनाइल ब्रोमीन ब्रोमीन consecutively, right? So this is the correct answer. Third one, third one is correct. Fourth नहीं होगा ना, because fourth is going to be 1 phenyl and 1 bromo. ठीक है, moving on. Try this. I'm giving you guys 1 more minute for this. Madiha and Iyad have answered. Yes, Shahan has answered. Okay, Maria. शायद एक बार फिर से देखिएगा प्लीज। No, Tarif, you have to see once again. Yes, Shahid correct. Yes, Tarif correct. Okay. So if you see this is my functional group. So functional group is CN. CN will be nitrile. There is no, then we look at the unsaturation. So there is no double bond or triple bond. So it will be EN. If you look at the parent carbon chain, then this will be the parent carbon chain starting from this carbon 2, 3, 4 carbon atoms. Okay. So the parent is what? Parent is 4 carbons. For 4 carbons, we write bute. Then we have one substituent. This is amino. So our substituent is going to be NH2, which is known as amino. Now we will start the numbering. Numbering start from the carbon atom that is containing the functional group. We'll start from here. 1 carbon, 2 carbon, 3 and 4 carbon atoms. ठीक है.
So the name of the compound will be, in the third position we are having amino, so it will be 3-amino butane nitrile. Okay. Option number D is the correct one. 3-amino butane nitrile. So moving on. Try this. स्टेटमेंट सही से पढ़िएगा, ऐसे ये पूरा है ना, जो नाम है और दिस कंपाउंड इज 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। There are 4 answers. वो 3 में से तो फादिल गई हैं। We have only 2 answers. Okay, फादिल मारिया करेक्ट। ठीक है भाई, देखिए, let us see this. ठीक है, how many carbons are there? 1 carbon, 3 carbons, that will 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon, 7 carbons. So hept part is fine. Then it is having a CO. CO means carbonyl. Carbonyl is having higher priority than the oxygen atom. So it will be on, that is also correct. And the numbering will start from this carbon atom that is near to the terminal carbon, which is near to the carbonyl. So it will start 1, 2. So heptane 2 on is also fine, and 7 hydroxy because the 7 carbon is having hydroxy. So this is true. Okay, and if you look at the statement 2, the option will be very obvious now. It is saying that 2-oxoheptane 7-ol is the correct IUPAC name for the above compound in the light of the above statement. Okay, now ये बोल रहा है it is the correct name, और ये बोल रहा है this is the IUPAC name. So both cannot be correct, no? See, so if this is true, this will be false, obviously. So the correct option will be statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Does this make sense? Yes or no, please tell me. Moving on. Did you try this? A species having carbon with sextet of electrons and sextet of electrons, that means it is having 6 electrons. So, no?
It has 6 electrons. Yes, Maria correct. Yes, Fadil correct. चलिए I'm giving you 1 more minute because this complete आपको अगर आ रहा तभी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा. यार ए में तो पेंटावैलेंट बोला, 5 वैलेंसी बोला है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे. You need to have 6 electrons. It can act as an electrophile. No. देखते हैं, चलिए ठीक है. हाँ. पेंटावैलेंट में तो 5 होगा. कार्बन फ्री रेडिकल हैज अ, इस तरह से होता है, and 1 electron. So you can see that 2 electrons in this bond, 2 electrons in this bond, 2 electrons in this bond. That will give you 6 electrons, and then this is 7 electrons. Then you have carbon ion. Carbon ion is going to be, and because of this lone pair electron, there will be a negative charge. As you can see, 2 electron, 2 electron, 2 electron, and 2 electron. That will give you 8 electrons. In the carbocation case, it will be 3 bonds and a positive charge. So 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons. That will give you 6 electrons, and that's why carbocation will be sextet of. Okay. Yeah, it makes sense. This one of these, Yes. आपको समझ में आया? ठीक है. This. Take 2 minutes. कोई आंसर नहीं आया अभी तक. कितना टाइम लगेगा? आयनिक रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शन होता है. आयनिक रिएक्शन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, बता देते हैं आपको. एंड देन यू हैव रेडिकल रिएक्शंस इन कंपैरिजन टू आयनिक रिएक्शंस. ठीक है, आयनिक रिएक्शंस होते हैं, रेडिकल रिएक्शंस होते हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट आयनिक रिएक्शंस. इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस. उनके फादर का एक आंसर आया है. यस, आई थिंक दैट्स करेक्ट. वेरी गुड. चलिए 20 सेकंड्स remaining. चलिए सी है. नो, या देखिए, एक आपका होता है दैट इज आयनिक, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के बीच में बॉन्ड है, तो बी को पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ए पे पॉजिटिव एंड बी पे नेगेटिव। तभी तो देखिए आयनिक आयंस बन रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आयनिक। दिस नोन एज, आई होप अब आपको लिटिक बॉन्ड है ना, या हेटेरो बॉन्ड, हेटेरोलिटिक बॉन्ड, ठीक है। एंड यू गेट व्हाट, अ कार्बोकेटाइन, इट्स नॉट अ कार्बोकेटाइन बट रादर यू गेट अ कैटायनिक स्पीशीज एंड एन अनायनिक स्पीशीज, जिसमें कैटायनिक जनरली कार्बन एटम होता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल द अदर स्पीशीज इज अ मेटल। So homolytic bond cleavage, no, obviously not. Heterolytic, yeah. Free radical, no, no, no. Primary free radical, no. Secondary free radical, no. ठीक है, so will be what, B only. Does this make sense? ये सवाल ना थोड़ा ट्राई कीजिए, 2 मिनट दे रहे हैं हम आप लोग को, ठीक है ना। अगर किसी को याद हो कॉन्फर्मेशंस, अगर नहीं याद ठीक है, तो आई विल डू दिस कॉन्फर्मेशंस। थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं तो आपको आंसर करने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग इन द केस ऑफ इथेन, इस इथेन में 2 कार्बन एटम्स होते हैं ना, 2 कार्बन एटम्स के हाइड्रोजन को इस तरह रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कहीं याद आ जाए आप लोग को तो, ठीक है, तो स्टैगर्ड होता है, एक्लिप्स होता है। सो दीज द हाइड्रोजन ऑफ द पोजिशन ऑफ दीज हाइड्रोजन कैन एक्चुअली चेंज है, तो उससे आपको अलग अलग कॉन्फर्मेशन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हाइड्रोजन, लाइक बोथ द कार्बन्स आर हैविंग हाइड्रोजन्स व्हिच आर कंप्लीटली फेसिंग ईच अदर, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, एक्लिप्स कर देंगे। अगर आप आगे से देखिएगा तो इफ यू लुकिंग एट द फर्स्ट वन, द फर्स्ट कार्बन हाइड्रोजन, देन यू कैन नॉट सी द नेक्स्ट वन, इट कैन बी लाइक दिस समटाइम्स, है ना, it can rotate even more, it can be like this, ठीक है। so these are the different कॉन्फर्मर्स। अब उस हिसाब से थोड़ा आंसर करने की कोशिश कीजिए, कहीं ध्यान आ गया हो अगर आपको तो। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बाय द वे, ठीक है ना, इनकरेक्ट बताना आपको। यार वेरी नाइस, आपको याद आ गया याद, यानी कि 11th का है ना यार। सही है, वेरी गुड। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर आपने 11th क्लास का स्टैगर्ड, मतलब आपने कॉन्फर्मेंस पढ़ा है, तो जैसे याद ने आंसर किया बाकी लोग भी, तो ये चीज तो आपको पता ही होगी। तो जो सवाल आ रहे हैं ना, दे आर लाइक क्या बोलते हैं ना, बहुत मोटे मोटे टॉपिक से आते हैं। दैट मीन्स अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है, जैसे कॉन्फर्मेशन करने का तो पढ़ा है, आपको ये वाला आंसर आ ही जाएगा। इतना आसान सवाल है। यस मारिया, वेरी गुड, करेक्ट। सो यहाँ पे you see this C on eclipse conformation is the most stable conformation, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज अगर eclipse conformation मोस्ट स्टेबल होता, दैट इज वाज दिस स्टेटमेंट, ठीक है। So this is not completely stable. Why? Because the hydrogen atoms will be what? They will be facing each other and there will be a lot more repulsion. Okay, so this eclipse conformation is not the most stable conformation. So the option is what? The correct option. So try this. The interaction between pi bond and lone pair of electrons present on an adjacent atom is responsible for pi bond का, pi electrons का, lone pair का किस कहाँ पे involvement होता है। These are the main effects that we study, na? Resonance electromagnetic hyperconjugation and electric effects. Okay, Fadil. हमारे थिंक वंस अगेन ना थोड़ा हाइप, ऐसा सोचिए जरा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने अगर 11th क्लास में बनाया है,
तो किस तरह से दिखते थे वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए आई विल गिव यू वन मोर मिनट। वेरी गुड मारिया। सी है। So यहाँ पे I will explain everything. So for example, what is resonance? So in resonance only we have the involvement of pi bond. ठीक है, pi bond, lone pair electrons, all of these are involved only when you are having what in resonance only. Pi bond is utilized in resonance effect only. Resonance आ जाए या फिर mesomeric effect लिख दे वो, ठीक है. What is electromeric effect? Electromeric effect is between two different species. It is not between a bond. A के आने से B में जो change आ रहा है ना, that is electromeric effect. ठीक है, that is electromagnetic. For example, let us suppose if you have stable bond O, ठीक है, and अब उसके बाद यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए इस तरह से with negative charge, then what will happen? It will lead to this change in the carbonyl carbon. The carbon will become positive, the oxygen will become negative. Now this nucleophile can easily attack. So this is now both of these are resonance structures also, but this is more valid when nucleophile comes along. ठीक है. So these cases are known as electromagnetic effect. Once you remove the nucleophile, then this form will be more stable. Electromagnetic. Now hyperconjugation effect is when you are having it is no bond resonance भी बोलते हैं इसको, in which sigma bond participates, but it participates like what, like resonance itself. ठीक है, वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, but it is sigma electron. Inductive effect is also what temporary, sorry, is a permanent effect which is given by sigma bonds only. Sigma bond में जो partial shifting of electrons is known as, someone having the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड वो होता है, इस्तेमाल जरूर होता है, बट इट इज नॉट बिटवीन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ टू atoms in a molecule, it is because of two different molecules altogether. ठीक है, चलिए, moving on to the next one, the set of meta directing functional group from the following sets. Meta directing, जैसे इसको हमको थोड़ा बाद में रखना चाहिए था, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों रख दिया. मेटा डायरेक्टिंग हम आप मतलब बता सकते हैं, बिकॉज टेंथ सॉरी 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है ना, एल्किन हैलोरीन के बारे में पढ़ा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के बारे में पढ़ा है नहीं? तो ओएच के बारे में पता होगा, अमीन्स के बारे में पता होगा आपको, और फिर अल्कोक्सी ग्रुप के बारे में पता होगा, एल्डिहाइड के बारे में पता होगा, दैट व्हाट आर दीस, वेदर मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है. यू हैव टू लुक फॉर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बाय द वे, है ना. अगर किसी में कोई एक भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया तो उसको काट देना है. यू हैव टू एलिमिनेट बेसिकली यहाँ पे. यस, हाँ तो वेरी गुड. यार सॉरी, मतलब ऑप्शन क्यों है नहीं? तारीफ सी वंस अगेन, एक बार फिर देखिए. क्यू के पास कौन सा लेटर आता है? क्यू के पास ए भी आता है, क्यू के पास डी भी आता है. याद कौन सा आप करना चाह रहे हैं? फिर से देखिए, फिर से देखिए. याद है तारीफ बहुत ऑफ यू.
I will give you guys 1 more minute. मारिया आपको नहीं आता ये वाला? मारिया, मतीहा, हाँ, तारीफ, अब ठीक है। मारिया and Madiha, tell me what happened. No, no, Maria, not that. Okay, time is almost going to over. जी हाँ, मदीहा, दैट इज करेक्ट। देखिए आपको क्या देखना है ना, आपको देखना इफ देर इज एनी प्लस एम ग्रुप, है ना, प्लस एम यानी कि अगर इफ इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो आई मीन दैट विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग देखने के लिए ना बहुत ही आसान तरीका क्या है, आपको देखना है कि जो आई मीन द की एटम इज द एटम दैट इज विल बी डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे एटम जो भी अटैच होगा ना, दिस एटम इफ इट इज हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने सारे नहीं, if it is having even one lone pair electron then it will be what it is going to be metal, sorry, ortho para डायरेक्टिंग अगर इसमें लोन पेयर हुआ तो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर व्हाट, अगर यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन आ चुका है, अगर आपके पास ऑक्सीजन आ चुका है, एंड दीज आर व्हाट सिंगली बॉन्डेड, नाइट्रोजन आपके पास दो बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन ने आपके पास एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, then similarly if you have halogen this is also going to be ortho para directing even though it is electron withdrawing group because it has three lone pairs, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। ठीक है, so as you can see here you have the key atom as nitrogen NH2 में, and NH2 will have a lone pair and that will act as a what, ortho para directing, so it is not. CN is fine because carbon then triply bonded to nitrogen, carbon doubly bonded to oxygen, but if you look at the next one, that is nitrogen, which is having one bond with hydrogen, the other bond is with this carbon atom, this will have a lone pair electron, so it is also not the correct option, and here also you have NH2, this will not be the correct option। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास you have NO2, CHO, SO3H and COR, all of these are all of these are all of these are meta directed, है ना, that means it is electron withdrawing। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे एक समझ लीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर समथिंग इज माइनस एम, है ना, माइनस एम ग्रुप्स सारे, यहाँ पे आपके पास एटम होगा एंड एटम विल बी, मतलब इट विल हैव मल्टीपल बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखिए नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, वेदर इट इज हैविंग लोन पेयर नो लोन पेयर, अब वो छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस एम कब होता है, व्हेन यू आर हैविंग व्हाट, द की एटम इट इज हैविंग अ डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड्स विद, उसी तरह से CHO में क्या होता है, कार्बन द की एटम इट इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड माइनस एम। SO3H में क्या होगा, सल्फर द की एटम इट इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड। COR में भी क्या होगा, COR विल बी डबल बॉन्ड O and then R and this carbon will be connected to the benzene ring, है ना, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कार्बन कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस एम। ठीक है, तो माइनस पर हमेशा आइडेंटिफाई कीजिएगा, इफ समथिंग इज नॉट माइनस एम तो फिर वो प्लस एम ही रहता है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इफ इट इज नॉट माइनस, for example CH3 जो होता है, CH3 does not have lone pair electrons but CH3 it acts as a what plus m effect because it acts as a plus m group because of the hyperconjugation, तो कोई अगर माइनस m नहीं है ना तो generally it is going to be a plus m। got this question पिछली मारिया याद? ठीक है, the functional group that shows negative resonance effect, है ना, तो वही हम लोगों को क्या लिखना है, you will have the key atom that is having a double bond with what, electronegative, कौन सा हो गया, तो बहुत आसान हो जाएगा, कीजिए जरा। I'm not saying that key atom will be electronegative. I'm saying the key atom can be anything, and it should be connected to an electronegative element via double bond or triple bond. Yes, Fadil, very good. अच्छा थोड़ा ऑर्गेनिक में आप कंफर्टेबल है यानी फादिल, हाँ? अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। ऑर्गेनिक में बहुत पूछा गया है इस बार तो, यस याद कर फादिल। बाय द वे, डिड यू गिव द फर्स्ट मींस
Yes, ER, very good, correct. अच्छा, क्या था आपका? आई थिंक मार्क्स आ गए होंगे ना? ओवरऑल या फिर? ओवरऑल सही था फिर तो, मतलब आप इम्प्रूव कर लीजिएगा तो काफी हो जाएगा फिर तो आपका। ओ नहीं, मारिया कैन यू प्लीज सेंड योर माइक ऑन? Yes, यस, sir. इंशाल्लाह। हाँ चलिए, आप बताइए व्हाट इज द की एटम? आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया ना, बी वाला, व्हाट इज द की एटम हियर? OR. नहीं नहीं नहीं, की एटम, एटम तो कोई एक ही होगा ना, तो ओ होगा या तो आर होगा। व्हाट डू यू थिंक, व्हिच एटम विल बी कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग डायरेक्टली? O. ओ। एंड व्हाट इज आर? अल्काइल ग्रुप, राइट? Yeah. CH3 ले लें, ठीक है, इट कैन बी, मतलब वन ऑफ द ऑप्शंस कैन बी ना, ओ आर में तो एक स्पेसिफिक केस ले लिया हमने। तो, तो की एटम और जो आपके पास सब्सिक्वेंट एटम, इट इज नॉट इवन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइदर द बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, तो ये तो नहीं होगा ना माइनस एम। Oh, क्या ख्याल है okay. हमारे, Yes. है ना? सो विच ऑप्शन टेल मी? Option C. या दैट इज करेक्ट, यू गॉट इट नाउ? Yes. दिस ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं, आपको सॉल्व खुद ही करना पड़ेगा। First of all, you will look at the number of bonds. Higher the number of bonds, which greater will be the stability. Bond देखना है. Secondly, you have to see that you have to see the charges. ठीक है, you have to see the charges. Positive charge on less electronegative and negative charge on more electronegative. सबसे पहले तो आपको बॉन्ड देखना, न्यूट्रल विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल देन एनीथिंग दैट इज हैविंग चार्जेस। ठीक है, न्यूट्रल हमेशा स्टेबल होगा ज्यादा, विदाउट द वन व्हिच इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कितने में आपका आंसर आ जाएगा, ट्राई कीजिए। You have got two answers till now. Okay, three answers, all of them are same. नो, या फिर से देखिए ना एक बार।
Yes, Fadil, correct. See, the most stable will be the first one because it's weaker. Now, if I look at the second and third one, both of them are having charges. यहाँ पे एक charge जो दिया, that's oxygen. If you see it is having 3 lone pair electrons, so it will be having a negative charge. That is not shown basically. Now, if I look at both of these, then the second structure will be more stable because oxygen, which is more electronegative, it is having negative charge. Carbon, which is more less electronegative, it is having positive charge. The reverse is in the case of the third one. First is most one and followed by third one. तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपको पहले ही पता चल गया वन, तो उसी में आंसर आ गया था आपका बी, है ना. यू डोंट इवन हैव टू लुक बिकॉज बी ही है जिसमें फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल. इवन इफ यू लुक एट बॉन्ड्स ना कि एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है. तो मोस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स है. इफ समथिंग इज न्यूट्रल ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हैव मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है. सो लेट अस ट्राई दिस वन एंड देन द रेस्ट वी आर गोइंग टू डू टुमारो. Here the following compound will be most easily attacked by an electrophile. अच्छा एक सेकंड फादर, आई एम सेइंग the positive charge here is on carbon atom, which is less electronegative, and here the positive charge in on oxygen atom, which is more electronegative. ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल होगा, जगह कहाँ स्टेबल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है. दैट इज वाई द टू विल बी मोर स्टेबल because here positive charge is on less electronegative, negative charge is on more electronegative. Make sense? Try this one. The following will be most easily attacked by an electrophile. ठीक है. So the condition here will be which is going to have the maximum electron density. ठीक है ना. आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मिलेगी, ए बी सी और डी. ओके, सारे बच्चों ने आंसर याद किया. एक में तो है. हाँ. अच्छा ठीक है. नो 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 याद. मदीहा, फादिल, नो, मारिया. ठीक है. देखिए, चलिए देखिए. ओ एच इज व्हाट, इट इज प्लस एम ग्रुप. ये तो समझ में आया था ना. मारिया एंड याद. आप लोग बताइए, ओ एच इज प्लस एम या माइनस एम लग रहा था आप लोग को. प्लस एम ओनली ना. बाकी चलिए ठीक है. सी एन एस तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं. बेंजीन में कोई इफेक्ट ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. डी, सी एस थ्री इज ऑल्सो व्हाट, प्लस एम. आपको देखना है कि ओ एच और सी एस थ्री में विच इज मोर. क्या ख्याल है. टेल मी गाइस.